Good morning students. Welcome to today's YouTube live streaming class, and this is organized by OSEPA. This is Leena Maharana, your English teacher, and as usual you are also going to learn from your Utthan English practice book, and you know today's worksheets are worksheet number 15 and 16. And you know students, in worksheet number 15 we are going to learn about role play. Role play पहले रोल प्ले माने कौन कहला, अभिनय करवा, भूमिका को कहार भूमिका को गोटे एक्ट करके देखेबा. रोल प्ले मीन्स इट्स एन एक्ट ऑफ इमिटेटिंग द कैरेक्टर, राइट. कौन सी चरित्र को आम अभिनय करवा हु इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, से बहुत अलग होइथिबो मठारु, किंतु वी हैव टू इमिटेट देयर बिहेवियर, देयर डायलॉग, ताको आम रोल प्ले बोली कहती. एंड व्हाई डू वी लर्न रोल प्ले, आम कहीं रोल प्ले पढ़ा, पढ़ले कौन आम लाभ हम. येस, जो आम रोल प्ले पढ़ुचे इट डेभलप्स आवर लैंग्वेज, आवर कम्युनिकेशन स्किल एंड आवर व्हाट थिंकिंग एबिलिटी, चिंतन करिवार शक्ति, आमर कथा कहिवार शैली, आमर भाषा ये सब परिमार्जित होता है. दैट इज व्हाई वी लर्न अबाउट रोल प्ले. अभिनय करवा शिखा आम करते. आम जदि आज क्लास रे थांते देन वी विल एक्ट ऑल दिस कैरेक्टर्स. आम आज जो रोल प्ले पढ़ाई चाहूचे से अनेक कैरेक्टर्स अच्छा, अर्थात चरित्र अच्छा, आम से अभिनय करते. बट टुडे आई एम गोइंग टू प्ले ऑल द रोल्स, राइट स्टूडेंट्स. So let us move to your worksheet number 15. It is the role play. But students, just we need some correction in your book. Open your book and look at here. This is worksheet number 15. But this line, ये जो लाइन टी अच्छी जो शिक्षण आम कौन शिखिले, दिस इज कॉपीड एंड पेस्टेड. यहाँ पूर्व पेज रो ए धाड़ीटी कॉपी पेस्ट हो जाइए, तेणु आम टिके ताको करेक्शन करनबा. ये आम शिखुचे आज द लर्नर्स रीड द टेक्स्ट एंड टेक पार्ट इन द रोल प्ले. तार शिक्षण कथाटी आमर ए धाड़ीटी रहिबो. तो आम केवल ये लिखिदेवा दिस इज अ रोल प्ले. ठीक अच्छे स्टूडेंट्स. सो लेट अस टू लर्न अबाउट दिस रोल प्ले एक्टिविटी. तो रोल प्ले रे कौन हुए पिला माने देख, ये बही रे अच्छी these are some characters. ये किसी लिखा अच्छी, ये किसी इमेज अच्छी, and here are some characters. They are टीना, सुजीत, मीनू, सोनू, सीमा. ठीक अच्छी. एवं look, ये गोटे कॉलन चिन्ह दिया है. टीना लिखा है, टीना जिते टीना लिखा है तापर गोटे कॉलन, या कहते कॉलन सिंबल, दीटा बड़ बड़ डॉट अच्छी एमती साइड रे, ताको कहुचे कॉलन सिंबल. दैट इंडिकेट्स दिस गर्ल और दिस बॉय इज टॉकिंग समथिंग. ए झीटी ए पुटी किसी कहवाई जाऊँगी, इट इज हिज और हर डायलॉग, राइट स्टूडेंट्स. सो लेट अस रीड द रोल प्ले. बट बिफोर दैट आम जाना गोटे रोल प्ले रे किए सब था कौन हुए सीटी. इन अ रोल प्ले वी डू कन्वर्सेशन, वी डू कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन कहले कौन पिला माने देखो ये CONVERSATION कन्वर्सेशन. ए वर्ड अर्थ है कथबार्ता है. सो इन योर एक्टिविटी लिखा है, इन एक्टिविटी नंबर 1 लुक एट योर बुक, कन्वर्सेशन इमंग फ्रेंड्स लिखा है. कन्वर्सेशन इमंग फ्रेंड्स ता अर्थ सांग मानक भितर कथबार्ता, कथोपकथन बा कथबार्ता. सो कन्वर्सेशन मीन्स कथबार्ता. So let us learn what all these boys and girls are talking about. Before that, look at your screen. Screen को देखो. Here two boys are talking with each other. They are doing conversation. They are doing conversation. One is asking something, another is answering. Right? The first boy is questioning, what time do you often get up in the morning? तुम्हें सकाळे केते बेले उठो? What time do you often get up in the morning? The second boy is answering, I get up at about 6 in the morning. मु सकाळ 6 रे उठी जाए. Next he is questioning, do you play in the evening? तुम्हें संध्या बेले खेलो कि? Do you play in the evening? The boy is answering, yes, I play in the evening. हाँ, मु संध्या बेले खेले. Yes, I play in the evening. This is conversation. This is conversation. What do you do after dinner? The next screen. Look at the next screen, students. What do you do after dinner? तुम्हें डिनर पर कौन करो? I read a story book after dinner. मु
गोटे गप बही पढ़े डिनर पर डिनर मीन्स रात्रि भोजन पर आई रीड अ स्टोरी बुक हाउ डू विश योर पेरेंट्स व्हाइल गोइंग टू स्लीप जो शोवा को जाओ तुम्हें केमती विश कर पेरेंट्स को माँ बाबा को देन ही आंसर्स आई विश देम गुड नाइट मुझे गुड नाइट कही शोई जाए आई विश देम गुड नाइट तो ये कौन अच्छी वी नो फॉर कन्वर्सेशन फॉर व्हाट टेकिंग ए पार्ट वी नीड 2 or more people 2 रु अधिक आमको दरकार कथबार्ता हाँपाई फॉर ए कन्वर्सेशन वी नीड 2 or more people नेक्स्ट स्क्रीन को देख लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन 2 girls are talking with each other by using their mobile phone or land phone right or not दी जन कथा होचंती using their mobile phones this is also a conversation but this conversation is called telephonic conversation आपको हम कौन कहते टेलीफोन रो कथबार्ता सेमती आउ गोटे तल को पिक्चर अच्छी देख जो रेस्टोरेंट इट इज अ इमेज ऑफ रेस्टोरेंट वेयर द वेटर इज डूइंग ए कन्वर्सेशन विथ द फैमिली पर्सन्स राइट और नॉट से वेटर टी गोटे परिवार लोक सहित कथबार्ता होची सो दीज आर द सीन ऑफ conversation now come to our page your page number what 32 we are now going to do this role play and I am going to read all these texts right students first of all look 6 children are talking with each other they are doing a conversation semane madhya eti katha barta hochindi let us know what are they talking about so first of all Tina says day after tomorrow is a holiday what shall we do Tina kohuchi Tina says day after tomorrow mane pile asanta kali then day after means tomorrow ro par dina day after tomorrow we normally say it pahar dina right so day after tomorrow is a holiday you know holiday mane chutti dina what shall we do ame kon kariba who says Tina says day after tomorrow is a holiday what shall we do Sujit says let's go for a picnic what Sujit kon kochi let's go for a picnic chalo gote picnic jiba let's go for a picnic then Minu says that will be fun bahut masti heba that will be fun then Sonu says yes that will be fun Sonu add kala ha bahut masti heba Sonu says yes that will be fun then Seema's dialogue Seema kon kochi where shall we go ame koti ki jiba where shall we go Tina says shall we go to Nandankanan ame Nandankanan jiba ki shall we go to Nandankanan Meenu says shall we go to Konark ame Konark jiba ki so in first page Tina Sujit Meenu Sonu Seema are doing a conversation right they are doing a role play then in the next page Sujit kohuchi let's go to Konark there is a famous sun temple सेठी कौन अच्छी कोणार्क रे प्रसिद्ध famous means प्रसिद्ध sun temple माने सूर्य मंदिर अच्छी who says Sujit says let's go to Konark there is the famous sun temple Ricky says we can see the sea and sunrise there Ricky कौन कहला पुनी we can see the sea look here there is a word sea SEEC and आउ गोटे वर्ड अच्छी SEAC the pronunciation is same CC but the meaning is different SEEC माने होची देखिबा SEAC माने समुद्र तो से कौन कहूची we can see the sea and sunrise there आमे सेठी समुद्र भी देखिबा आ सूर्योदय भी देखिबा sunrise means सूर्योदय all माने समस्ते कहले all the children says yes we can enjoy the sea beach and sunrise there हाँ आमे समस्ते सेठी सनराइज भी देखिबा और सी बीच भी देखिबा बीच माने समुद्र उपकूल सी बीच समुद्र कूल समुद्र उपकूल देन सीमा सेज यस बट हु विल गाइड अस हमको की गाइड करिवो प्रतिरक्षा के करिवो सुरक्षा सहित के नै कि जीवो हु विल गाइड अस हु सेज सीमा यस बट हु विल गाइड अस सोनू सेज लेट्स आस्क आवर पेरेंट्स चलो हम पेरेंट्स को पचारिया माँ बाबा को पचारिया अभिभावक मान को पचारिया हम केमती जीवा Then Ricky says, don't worry, my mother will come and guide us. Don't worry माने व्यस्त हुआनी ठीक अच्छे don't worry व्यस्त हुआनी my mother will come मो मामा आसबे आउ से हमको गाइड करके नहीं जीवे से हमको सुरक्षार सहित हमको से जगह को नहीं जीवे तापर समस्तंकर एक्सप्रेशन कौन थला या YEAH या it is another way of saying yes
येस कहवा या समस्त खुशी रे कहते या तो से माने ऑल समस्त एक्सप्रेशन कौन था येस बा या तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन दिस फ्रेंड्स गॉट इट स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज आमे এই সেন্টেন্স বা এই যে কনভারসেসন চালিଥିଲା তা ভিতর কিছু সেন্টেন্স মু নেই যাইছি এবং তাকু জম্বল कर देछि आई हैव जम्बल्ड सम सेंटेंसेस कैन वी अनजम्बल देम कैन यू राइट द करेक्ट सेंटेंस आमे डायलॉग कहूचे ना इन ए वे रे आमे करेक्ट करि परबा हम डायलॉग्स को सो डू शैल वी व्हाट नंबर 1 इज डू शैल वी व्हाट अनजम्बल द सेंटेंसेस पेज डू शैल वी व्हाट एटा जने कहिछि दिस इज अ डायलॉग फॉर अ कैरेक्टर तो एटा कौन थिला डू शैल वी व्हाट करेक्ट आंसर इज व्हाट शैल वी डू करेक्ट आंसर इज लेट मी रब दिस व्हाट शैल वी डू व्हाट शैल वी डू देन फॉर ए गो पिकनिक लेट्स फॉर ए गो पिकनिक लेट्स कौन हम आंसर let's go for a picnic let's go for a picnic let's go for a picnic ठीक है students now I'm going to discuss all these things you listen and do it on your own Konark we to go shall Konark we to go shall कौन हवा सेठी shall we go to Konark this is the dialogue of Tina shall we go to Konark then will Bertus guide who but who will guide us who says ए डायलॉग टा के कहितला हमको के गाइड करियो बोली के कहितला सीमा सीमा says but who will guide us then sorry our ask parents let's लिखा हेची उल्टा पलटा हे हेची ना our ask parents let's इटी कोन हबो करेक्ट सेंटेंस टा कोन हबो let's ask our parents let's ask our parents ए डायलॉग टा कहार थिला सोनू रो थिला सो लेट्स आस्क आवर पेरेंट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 3 मु कौन करची आउ टिके नॉलेज पई आमे किछि क्वेश्चनर कर देचे जेठी एक्टिविटी नंबर 3 नेक्स्ट पेज एबे आमे डिस्कस करबा क्वेश्चंस हु आर देयर इन द रोल प्ले ए रोल प्ले रे की सब थिले देयर आर टीना सुजीत मीनू सोनू सीमा and Ricky in the role play right students next one can you name a holiday आमे गोटे हॉलिडे कहि परिबा छुट्टी दिन रो ना कहि परिबा I say Sunday तुमे आउट भी किछि कहि परिबो so Sunday is a holiday what are the children talking about को विषय रे सी ए छुआ माने बस के कथा होतले तो children all what are they talking about they are planning for a picnic then the children are talking to go on a picnic गोटे पिकनिक जेबा पई से माने कथा वार्ता होतले where is नंदनकानन कोठी नंदनकानन हम जानछे नंदनकानन इज इन भुवनेश्वर राइट वेयर इज कोणार्क कोणार्क कोठी बहुत फेमस नहीं कि कोणार्क इज इन पुरी सो व्हाई कोणार्क इज फेमस कोणार्क टा काहे केते प्रसिद्ध काहे कि समस्त जानंती बिकॉज़ देयर इज अ सन टेंपल कोणार्क इज फेमस फॉर द सन टेंपल सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 2 दिस इज आल्सो इन योर बुक look at your page number 33 this one I am going to discuss you have to complete it who says what ame role play kale then who says what who plays whose character right students को चरित्र टी के अभिनय करथिला बा कहितला को डायलॉग टी के कहितला first one is done for you what shall we do that was says by Tina next one let's go for a picnic who says this one let's go for a picnic के कहितला Sujit says let's go for a picnic yes that will be fun a line ta ke kitla who says this dialogue yes that will be fun Sonu says yes that will be fun where shall we go a dialogue ti ke kitla where shall we go who says where shall we go Seema ame koti ke jiba where shall we go Seema says we can see let's go to Konark let's go to Konark who says this sentence let's go to Konark again Sujit says let's go to Konark we can see the sea and sunrise there आमे सेठी समुद्र sunrise की भी देखिबा के कहितला एटा who says this Ricky says we can see the sea and sunrise there who will guide us के कहितले who will guide us Seema's dialogue Seema says who will guide us
Yeah, ekatra ki koitla? All the children. My mother will come and guide us. Ki koitla? Who says this line? Ricky says. Right, students? So do this activity on your own. And look, students, another thing is you have to correct. Activity number 2, it is nothing, only copied and pasted here. So just cut it here. Now move to worksheet number 16. So look at your screen, students. कौन देखुचे आमे एठी? What do you see in the screen? Yes, there are some pictures. But is tomato is visible here? Tomato is visible, right? Na? So look, there are two colors in your screen, apple and tomato. Then corn and sunflower. What color they are? They are red and yellow. So why do we show all these things to you? Because what we are going to learn today is based on these colors. A colors को नेकी आमे आज गोटे story पढ़िवा. So can you guess the story? Next page. See the pictures. Can you guess the story? Yes, it is a very small text about Lalu and Pilu, about two chicks. So move. Let us read the text. Look at your screen. The story is, there was a hen. There was a hen. देखो, image रे देखो. There was a hen. Next one. She had two chicks. She had two chicks. Next page रे कौन आसला तुम्हारा? She had two chicks. A hen and two chicks. She had two chicks. Next. Lalu and Pilu. Lalu and Pilu. Next one. Lalu was red. Lalu was red. Look how beautiful the chick is, right? Lalu was red. Next. He loved red things. कौन भल पाउथला? He loved red things. Now, next one. Pilu was yellow. Pilu was yellow. Look that bird. How beautiful is it? Pilu was yellow. Next. He loved yellow things. He loved yellow things. Look at the yellow objects and Pilu. He loved yellow things. Next one. One day, Lalu saw something on a plant. One day, Lalu saw something on a plant. It was red. Next page. It was red. Then, he ate it up. He ate it up. देखो, look that Lalu, he was eating that red object, red thing. He ate it up. Oh no, it was a red chilli. Next page. Oh no, it was a red chilli. Right. So, let us read the text again, students, because it was a very beautiful story and very enjoyable, right or not? I love it too. So, Lalu and Pilu. Let us read the text again. Look, very colorful screen, right or not? Lalu is in red color, Pilu is in yellow color. So, there was a hen. She had two chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red. He loved red things. Pilu was yellow. He loved yellow things. One day, Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. Oh no, it was a red chilli. You know what is the taste of a red chilli? Chilli, you know? ए गपटा आमे जानी पारले चित्र देखि के आमे निहाती बुझी पारथिबा गोटे कुकुडा थिले तार दीटा छुआ थिले छोटे छोटे चिक्स लालू एंड पीलू लालू होतला रेड कलर रा हाउ ही लव रेड थिंग्स ताकू सब रेड जिंस पसंद एंड पीलू वाज येलो पीलू येलो रंग रा थिला पीलू वाज येलो ही लव्ड येलो थिंग्स ताकू सब येलो जिंस पसंद थिला ही लव्ड येलो थिंग्स दिने कोन हेछि वन डे लालू saw something on a plant गोटे प्लांट रे से किछि देखला प्लांट माने छोट गछ गोटे चारा गछ बेले छोट गछ रे किछि देखिला एंड इट वाज रेड बिकॉज़ ही लव्ड रेड थिंग्स ही वाज अट्रैक्टेड टू रेड से आकर्षित हेगला रेड थिंग्स को देन ही एट इट अप से किछि न भाबी ताकू खाई देला ही एट इट अप ओ नो इट वाज ए रेड चिल्ली रा कोन थिला गोटे लाल रंगर लंका थिला चिल्ली मींस लंका तो व्हाट टेस्ट इट इज so hot, right or not? So you can imagine what
must be happened to that red cheek, right or not? So this is the text. Now students, let us comprehend, let us do an activity, let us match something from this text. Hen had, Lalu loved, Pelu loved red. Can you see the screen students? Hen had, Lalu loved, Pelu loved red. In the next column there is written yellow things, chilli, red things and 2 chicks. Can you match it students? Hen had, hen रो कौन थिला? Hen had कौन होबो एटी? Hen had 2 chicks. तार केतरा chicks थिले? 2 chicks. Then Lalu loved, Lalu कौन भल पाउथला? Lalu loved, answer is सेठी अछि मैचिंग करिबा कौन थिला? Lalu loved red things. Then Pelu loved, Pelu को कौन पसंद थिला? Pelu loved what? Yellow things. Pelu loved yellow things. Then red color रा कौन थिला से जिनसटा? That is a chilli, right students? So move to the next worksheet. Can you see some images students? Can you see it? देखो आमे जेमते जानिले hen रा babies को कौन कहती? Chicks. Hen's baby chicks. सेमती duck रा baby को कौन कहबा? Look, the babies of duck. Duck babies are called duckling. What are they called? Duckling. Duck's baby duckling. Owl. Owl माने पेचा. पेचा रा छुआ को कौन कहबा? Owlet. Owl's babies are owlet. Swan. हंस रा कौन कहबा? Cygnet. What are they called? Cygnet. Hen's babies are chick. काहेंगे कोइली? There is a story about hen and chicks. You can also create your own story by using owl, owlet, duck, duckling, swan, cygnet. Yes, it will be easy for you. Move to the next screen. Base form of words. पिला माने ए स्टोरी रे किछि जिंस अछि जो गुडा की पास्ट रे लिखा अछि. हम सब बळे जानचे स्टोरी गुडा को सब अतीतर वर्ड्स को नेकी तयारी होता है. केमती गोटे कुकुड़ा थिला, तार दीटा छुआ थिले राइट. आउ से भलो पाउथिला, से पसंद करथला रेड थिंग्स को. ही एट इट अप, से खाई देला. तो these are some words that are written in past form of words. तो ये देखो, loved. Lalu loved red things. एटा होची तार पास्ट रो फॉर्म रे लिखा अछि. तार बेस फॉर्म बा मूल रा वर्ड होची लव. लव लव्ड. सेमती एट आमे इथरे वर्ड पाइले ही एट इट अप, से ताको खाई देला. ही एट इट अप. तार मूल रूप बा मूल वर्डटा खाइबार वर्डटा होची ईट. ईट रो एट, खाइबा खाई देला. एट आउ ईट, राइट स्टूडेंट्स. आउ कोन थिला? सी आउ सॉ. ही सॉ अ रेड थिंग अछि SAW. तो तार मूल बा बेस फॉर्म इज सी अर्थात देखिबा. सी सॉ, इट एट, लव लव्ड. तो आम नेक्स्ट क्लास रे केबे ग्रामेटिकली पढ़िले को आफसर जानिबे जे दीज आर वर्ब्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. तो आम आज खाली एतिकी जानिबा जेते आमे स्टोरी व्हेन वी राइट ए स्टोरी सेते आमे किछि पास्ट जिंस को जदी नोचे तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स को आमे नै लिखिबा. राइट स्टूडेंट्स. सी सॉ, इट एट, लव लव्ड. दिस इज द past form of verb and this is the base form, mula rupa. Right students? So next move to the another screen, your activity number 1. This page is about reading text and comprehending, right student? आमे पढ़ी की ताको question answer करिबा. तो in this worksheet also we need some correction. Look at your page number 34. एटी कौन अच्छी 34 रे आमर कौन अच्छी किसी करेक्शन करियर अच्छी. लुक एटी लिखा जी स्मॉल टेक्स्ट एस गोटे ऐड हो जाइए. तो कट इट डाउन, जस्ट रब दिस एस एंड लुक हियर. ओ नो, इट वाज रेड चिली. सो हियर इट वाज अ रेड चिली. इट वाज पर गोटे ए लिखा ये
रेड चिल्ली चिल्ली रा स्पेलिंग देख पिलाने लिखा अछि CHILLY लिखा अछि ना तमे जानछ यार अर्थ होची बहुत ठंडा चिल रो चिल्ली चिल्ली प्लेस हिमाचल इज चिल्ली प्लेस हिमालय इज चिल्ली प्लेस बहुत ठंडा अत्यधिक ठंडा किंतु आमे पढुचे कहा विषय रे CHILLI चिल्ली माने लंका राइट स्टूडेंट्स सो करेक्ट इट जस्ट cut it and write here I. So these are the corrections we need. Our question number 3, look here, chicks double S is written. It is just typing mistake students. So double S likha hai, we have to rub one S here, right students? So let us do this activity. Activity number 1. Who are there in the paragraph? A paragraph re kiye achanti? Who are there in the paragraph? There are 2 chicks and their mother in the paragraph. Dita chick ba choto chua kukudar ebon tar mother a paragraph re achanti. There are 2 chicks and their mother in the paragraph. How many chicks the hen had? The hen had 2 chicks. The hen had 2 chicks. Dita chua thile. The hen had 2 chicks. What are the names of the 2 chicks? Chua dita na kon thila chicks ra name kon thila? The names of 2 chicks are Lalu and Pilu. The names of 2 chicks are Lalu and Pilu. How was Lalu? Lalu kemti thila dekhiya ko? How was Lalu? Lalu was red. Lalu was red. Se red rangara thila. Lalu was red. How was Pilu? Pilu kemti thila? Pilu was yellow. Pilu was yellow. Next page. What did Lalu like? Lalu को कौन पसंद थिला? What did Lalu like? Lalu liked red things. Lalu liked red things. What did Pilu like? Pilu को कौन पसंद थिला? Pilu liked yellow things. Pilu liked yellow things. What did Lalu see on a plant? Lalu saw a chilli on a plant. Then what color it was? Say red things ro color कौन थिला? It was red in color. Lalu ate. Who ate the red chilli? के खाई दिला? Lalu ate the red chilli. Next page देखो पिला माने स्क्रीन रे कलरफुल चिक्स. लालू और पीलू कथा होचंती. चलो एमानो को नेम दबा. Lalu and Pilu are talking that naming these chicks. There is a pink color chick. What name you guess to give it? I guess Pinku. Next one is black in color. I will name it Kalu. Next one is orange in color. Think a name, but I guess I will give a name to name Kamlu. I will give Kamlu. Then next one is blue in color, students. What should we name it? I will give a name Neelu, right students? So Lalu and Pilu have decided to name these chicks Pinku, Kalu, Kamlu and Neelu. Very good, na? Very colorful chicks. Next page students, activity number 2, naming the pictures. आमे जेमती से मानको नाम देले एठी भी नेम दबा. The first picture is a picture of a hen, H-E-N, hen. Write down H-E-N, hen. Next image is red chilies. कौन लिखिबा? C-H-I-L-L-I-E-S. There are so many chilies. So C-H-I-L-L-I-E-S, chilies. Next image is the is a pink what? The Pilu. You can write it Pilu or you can write also what? Yellow chick. The next one is Lalu or a red chick. So this is all about your activities. I hope you enjoyed all these things, students. So do these activities and send to your teachers. See you in the next class. Bye bye. Thank you.